नमस्कार, खेल समाचार में आप सबका स्वागत है और मैं हूं गौरव कुमार। और आज वाकई खेल की दुनिया में तहलका मचा है और इसे किया है टीम इंडिया ने। दरअसल टीम इंडिया ने आज कानपुर टेस्ट को अपने नाम कर लिया और ये टेस्ट जिन मायनों में अहम रहा उस पर हम अगले आधे घंटे जो है वो चर्चा भी करेंगे और जानेंगे इसके विभिन्न पहलुओं को। इसके अलावा लीमा में जारी जो विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप है उसमें भी भारतीय निशानेबाजों का दमखम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो इन सब खबरों को देखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या है इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। कानपुर टेस्ट में भारत ने रचा इतिहास, बांग्लादेश पर दर्ज की 7 विकेट की धमाकेदार जीत। सीरीज पर जमाया 2-0 से कब्जा, आर अश्विन प्लेयर ऑफ द सीरीज। वहीं आईएसएसएफ जूनियर विश्व निशानेबाजी में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी। पार्थ राकेश मने ने 10 मीटर एयर राइफल में व्यक्तिगत और टीम इवेंट दोनों में जीता स्वर्ण। 5 स्वर्ण के साथ भारत शीर्ष पर बरकरार। यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में आज देर रात आर्सेनल, मैन सिटी और बार्सिलोना खोलेंगी मोर्चा। आर्सेनल का सामना पीएसजी से, तो वहीं बार्सिलोना यंग बॉयज और मैन सिटी स्लोवन ब्राटिस्लावा के खिलाफ उतरेगी मैदान पर। और चाइना ओपन में कार्लोस अल्कराज के जीत का दौर जारी। डेनियल मेदवेदेव को हरा, प्रतियोगिता के फाइनल में बनाई जगह। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं कानपुर टेस्ट में भारत की शानदार जीत के साथ। कानपुर टेस्ट को भारत ने 7 विकेट से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज भी 2-0 से अपने नाम की। मैच के शुरुआती 3 दिन खराब रोशनी और बारिश के चलते प्रभावित रहे। इसके बावजूद टीम इंडिया ने करिश्माई प्रदर्शन करते हुए मुकाबले को अपने नाम किया। दूसरे टेस्ट की दोनों पारियों में भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक जड़े, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं सीरीज में 114 रन और 11 विकेट लेने वाले आर अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में क्रिकेट प्रेमियों को वनडे जैसा रोमांच देखने को मिला। बारिश से प्रभावित टेस्ट मैच को भारत ने आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार गेंदबाजी की मदद से अंतिम दिन चाय से पहले मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पहले दिन बारिश के चलते केवल 35 ओवर का ही मुकाबला देखने को मिला। इसके बाद दूसरे और तीसरे दिन का पूरा खेल बारिश और गीले मैदान के कारण नहीं हो सका। भारतीय टीम के पास कानपुर टेस्ट को जीतने के लिए आखिरी 2 दिनों का ही समय था। इन्हीं 2 दिनों में बांग्लादेश को 2 पारियों में समेटना था और आक्रामक बल्लेबाजी भी करनी थी। चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत ने बांग्लादेश की पहली पारी 233 रन पर समेट दी। भारतीय टीम ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 285 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। इस तरह भारतीय टीम ने पहली पारी में 52 रन की बढ़त बना ली। भारतीय टीम ने अपनी बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया। टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 50, 100, 150, 200 और 250 रन पूरे करने वाली टीम बन गई है। अपनी दूसरी पारी में बांग्लादेश की पूरी टीम भारतीय गेंदबाजों के आगे बेबस दिखी। 5वें दिन बांग्लादेश की टीम लंच से पहले ही 146 रन पर सिमट गई। इस तरह भारतीय टीम को 95 रन का टारगेट मिला। भारत ने इस लक्ष्य को 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पहली पारी में आक्रामक अर्धशतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल ने दूसरी पारी में भी अर्धशतक की पारी खेलते हुए 51 रन बनाए। विराट कोहली 29 रन बनाकर नाबाद रहे। इस तरह भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को क्लीन स्वीप करते हुए अपने नाम किया। मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं सीरीज में 114 रन और 11 विकेट लेने वाले आर अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। टेस्ट सीरीज की जीत से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में भारत की नंबर 1 की जगह मजबूत हो गई है और वो लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंचने की प्रबल दावेदार बनी हुई है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई करिश्माई जीत जो है वो भारत ने दर्ज की और बड़ी बात यह रही है कि सिर्फ 2 दिन के अंदर यानी कि चौथे और 5वें दिन ये करिश्मा हुआ है। और भारत की बांग्लादेश पर आई इस बड़ी जीत पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। तो मुकेश, सबसे पहला सवाल, वाकई एकदम टेस्ट क्रिकेट को भले ही टेस्ट क्रिकेट ये कहा जाए लेकिन T20 से किसी मायने में कम नहीं रहा और जिसे किया है भारतीय टीम ने।
गौरव देखिए, जिस तरह से आप देखें पहले दिन न सिर्फ 35 ओवर डाले जाते हैं, दूसरे और तीसरे दिन का मुकाबला ही नहीं होता है, यानी पूरा व्हाइट वॉश हो जाता है। उसके बाद क्या कोई सोचेगा ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, और कोई भी टीम सोचेगी ठीक है स्कोर बोर्ड पे रन बनाते हैं क्योंकि बैटिंग पिच है तो जितने रन बनेंगे अपने अपने रिकॉर्ड्स को बेहतर करते हैं। सभी के पास मौका था, लेकिन यहाँ पर जो गैम्बलिंग खेलने का काम किया वो किया कप्तान कोच गंभीर ने। उन्होंने बोला नहीं, इसको जीत में बदल करके दिखाते हैं। उनका साथ दिया रोहित शर्मा ने, और सबसे स्प्लेंडर्ड यहाँ पर जो रहा, शानदार रहा, वो रहा यशस्वी जायसवाल का। जब वो उतरे और उन्होंने देखिए पहले ओवर में जो 3 चौके लगाए थे, उससे उन्होंने अपना जो अंदेशा था वो साफ कर दिया था कि भाई यहाँ वो रुकने वाले नहीं है। और उसके बाद रोहित शर्मा जो उन्होंने उठा करके 2 छक्के लगाए अगले ओवर में, तो ये क्लियर हो गया था कि विजन क्लियर है, इस पर रुकेंगे नहीं और जितना रन बनाना चाहेंगे बनाएंगे। और वही करके दिखाया, ना तो कोहली रुके, ना यहाँ पर यशस्वी जायसवाल रुके, रोहित शर्मा रुके, और जो बची खुची आस थी वो नीचे आकर के केएल राहुल ने पूरी कर दी। तो आप जब इस मनोबल के साथ उतरते हैं कि नहीं अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, अपने सपोर्टर्स के बीच में खेल रहे हैं, उनको भी निराश नहीं करना है। ठीक है बारिश हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खेला, आज पूरी दुनिया में जितने भी क्रिकेट पंडित हैं, जितने भी खेल के महान खिलाड़ी हैं, वो तमाम खिलाड़ी तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई क्या खा करके आए थे ये बल्लेबाज, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनको पता था यहाँ पर अगर ड्रॉ करा लेंगे तो भी सीरीज में उनके पास एडवांटेज है, पहला मुकाबला जीत करके आए हैं, लेकिन इस बार स्ट्रैटेजी बिल्कुल चेंज थी। और ये बदले हुए अंदाज के साथ आप देखिए जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने अपना फास्टेस्ट 50 बनाया, वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड को तोड़ा। उसके बाद इंडिया अपना 50वां 100, 200, 250 कहाँ रुक रही है, कहीं नहीं रुक रही है। तो गौरव जो ओपोनेंट था उनके पास मेरे को लगता है कि कुछ बचा नहीं था, और आज जिस तरह से उन्होंने फिर से उनको एक बार बंडल आउट किया, पूरे के पूरे टीम को वापस भेजा, यानी इन 2.5 दिन के अंदर आप देखिए 2 बार बांग्लादेश की टीम पूरी आउट हो जाती है, समझ नहीं पाती है। आपका जो एग्रेशन है, आपका एटीट्यूड है, खेलने का जो जज्बा है, वो दिखा देता है कि भाई आप महानतम खिलाड़ियों में क्यों शुमार हैं। और यशस्वी जायसवाल की सभी तारीफ करें, दोनों पारियों में उन्होंने जिस अंदाज में खेला, बहुत शानदार प्रदर्शन था। विराट कोहली के लिए एडवांटेज था क्योंकि एक साल हो गया उनके बैट से 50 नहीं निकला है, लेकिन यहाँ 47 रन खेलने के बाद भी वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि फटाफट स्कोर बोर्ड पे रन बनाए। चाहते तो 2-3 रन आराम से बना करके अपने 1 साल के सूखे को खत्म कर सकते थे, लेकिन जब आपके मंसूबे साफ हो, इरादा साफ हो, तो मेरे को लगता है ये छोटी मोटी लालच खिलाड़ी करते नहीं है, इसीलिए महानतम खिलाड़ियों में शुमार है। बिल्कुल मुकेश, जाहिर तौर पर ये जीत जो है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि WTC की जो पॉइंट्स टेबल थी उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ये जीत, क्योंकि अगर ड्रॉ की तरफ हम जाते तो WTC के पॉइंट्स टेबल में हमें थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था, लेकिन अब ये जीत हो गई है तो यकीनी तौर पर हम मजबूत स्थिति। तो आइए अब अभी फिलहाल सीधे चल पड़ते हैं MEA की PC में विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता की ओर। We have with us Shri Jaideep Mazumdar, Secretary East, to conduct the special briefing. We also joined on the dais by Additional Secretary Shri G.V. Srinivas, who looks after Latin America and Caribbean countries, and our High Commissioner in Jamaica, Shri Mayank Joshi. With that, I invite Secretary Sir to give his opening remarks. Sir, over to you. Thank you, Randy. As you all know, the Prime Minister of Jamaica, the Most Honorable Andrew Holness, is paying an official visit to India at the invitation of Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. I would like to share with you some highlights of the visit, and then if you have any questions, I will take them. Prime Minister Dr. Andrew Holness arrived yesterday. This is his first visit to India, and also the first ever visit by a Prime Minister of Jamaica to India. The two Prime Ministers had a delegation level meeting today, and they had wide-ranging discussions on each issues of bilateral interest and regional and international issues. They identified digitalization, health and medicine, sports cooperation, defense, education, trade, agriculture, infrastructure, culture, skill development, and capacity building as pillars of strengthening bilateral relations. Prime Minister hosted a banquet lunch for the visiting Prime Minister. Both Prime Ministers witnessed exchange of MOUs in different fields. These include cooperation in digital public infrastructure, in digital public, in UPI,
and in culture and in sports. Prime Minister Holness has also called on Honorable President of India and Honorable Vice President of India during the day, and has a number of other ministerial meetings also scheduled. As a special gesture befitting our very close relations, a street in front of the Jamaican High Commission was named as Jamaica Marg yesterday. As you know, India and Jamaica share a very strong historical, cultural relations reflected in our shared past, our values of democracy and freedom, and passion for cricket. This visit is expected our values of democracy and freedom and passion for cricket. This visit is expected to bolster our bilateral relations and enhance our economic cooperation, solidifying these long-standing bonds. There will also be a business interaction between the Prime Minister and his delegation. This is being organized by CII. The 4 MOUs that were signed today, the one on the MOU on sharing cooperation in the field of sharing successful digital public infrastructure, is aimed at promoting financial inclusion and social and economic transformation. As you know, India has demonstrative leadership in this area and has successfully provided public services even during COVID-19. Many countries have expressed their interest in learning and entering into MOUs with India in this field. These solutions are already successfully implemented on population scale in India, and by collaborating with India, Jamaica can leverage the development partnership on digital transformation. Another MOU was on an MOU between NPCI International Payments Limited and eGov Jamaica Limited. This MOU lays the foundation for both countries to assess collaboration in digital payments. Jamaica should be able to not only enhance digital payment capabilities for personal and merchant payments in an interoperable way, but also pave the way for digital inclusion. An MOU on cultural exchange program was signed, which extends the cultural exchange program from 2024 to 2029. This will strengthen our bilateral cooperation activities between cultural institutions of both sides. An MOU on sports between the Ministry of Youth Affairs and Sports and the Ministry of Culture, Gender, Entertainment and Sports of Jamaica will establish a framework for developing and implementing detailed proposals for cooperative programs in this area. You would have seen the press statements made by both the Prime Ministers. Our Prime Minister highlighted that our relationship is defined by 4 C's: culture, cricket, Commonwealth, and the Caribbean. And the Jamaican Prime Minister acknowledged the contribution made by Indians in the development of Jamaica. As you know, there are about 70,000 diaspora of Indian origin who have been in Jamaica for more than 150 years, and their contribution to Jamaica was acknowledged. Prime Minister proposed that since next year, 2025, is the 180th year of the arrival of Indians in Jamaica, it should be suitably commemorated by both countries, and this was warmly accepted by Prime Minister Holness. In fact, Prime Minister Holness also gifted to Prime Minister a photograph of his own visit to Jamaica in 1999, where he interacted with the diaspora there. And this was even before he had become Chief Minister of Gujarat State. That was a touching gesture from the Prime Minister of Jamaica. The Jamaican Prime Minister also expressed his gratitude to the Government of India for the assistance that was received during the COVID pandemic, including 50,000 vaccines that were provided by India.
He appreciated India's global advocacy and leadership in matters affecting developing countries such as climate change, and also for providing a voice for the global south. In fact, Jamaica has participated in all three iterations of the Voice of Global South Summit. The Prime Minister of Jamaica also announced Jamaica's intention to join the Global Biofuels Alliance, which is spearheaded by India. They are already a member of the Solar Alliance and also the CDRI. He shared views on the reform of the United Nations, in particular the Security Council, and said that it is necessary to ensure that its composition is reflective of the current balance of power and the emergence of new leaders like India. He confirmed that Jamaica will support India's candidature for UN Security Council non-permanent member for the term 2028-2029. He also expressed his deep appreciation at the revolution brought about by digital public infrastructure in India in respect to the direct benefit transfers, and said that Jamaica wanted to benefit from flagship products like Aadhaar and UPI. On education, both sides agreed to cooperate. Jamaica was interested in sharing curriculum, technology in education, and the recruitment of teachers, especially in STEM areas. Prime Minister Holness also expressed his deep appreciation for India's contribution to the scoreboards on Sabina Park and also the flood lighting that is being done there. The Jamaican Prime Minister also appreciated capacity building programs that India has contributed to, especially in the field of defense, where 3 officer cadets are currently undergoing training in India. Coast Guard capacity building was also identified as an area of cooperation. From Delhi, the Prime Minister will travel to Sarnath and also to Varanasi, where he will witness the Ganga Aarti tomorrow. He will also subsequently the next day visit the Parliament complex. So this is all I have for you for now. If you have any questions, I'd be very happy to try and respond to them. Uma first. Sir, I'm Huma Siddiqui from the Financial Express. You mentioned that the two sides also discussed defense and security. What exactly are they looking for from India in defense and security? And there was also some talk a while ago about getting some kind of a software to deal with the narcotics movement on the border of Jamaica, if that was also part of the discussion. Sahil. Sir, I'm Sahil from ANI. You talked about the DPI and any roadmap ahead. When can that be functional in Jamaica? Siddhant. Siddhant from Beyond. So my first question is, the Prime Minister mentioned about capacity building when it comes to defense. So if you can elaborate on that aspect. And secondly, on a lighter note, how much cricket was discussed between the two leaders? We saw the Prime Minister mentioning it several times. So this is Arnab. Yeah, okay, one more. So what's the discussion about Global Biofuel Alliance and on Global South? I think the question on defense and security I will take together. As I said, Prime Minister Holness deeply appreciated the capacity building that we provide. We have 5 defense high-tech slots for Jamaicans every year. This year there were 3 officer cadets who were undergoing officer training here. He especially appreciated the fact that technology is such a strong component of our training in defense, and he said that his officers really benefited from that, and that he would like to integrate technology into their defense systems, and he was looking to India to help them with that. We also discussed how Coast Guard cooperation could develop. In the area of defense,
and security, Jamaica is particularly concerned about transnational organized crime, including drug trafficking and cybercrime. So these were issues that were discussed, and it was agreed that we would carry forward our cooperation in these respects. About UPI, no timeline has been fixed. Both sides have just signed an MOU, and they will explore. As you know, Jamaica has their own payment system called GEMDEX, and so they will see how to integrate the two. And the fact is that that the Jamaican side is very keen to learn from our experience with UPI and how to replicate it in Jamaica. A lot was discussed regarding cricket. In fact, Chris Gayle was there at Prime Minister's lunch as well, and so there was plenty of discussion about cricket and the contributions of Jamaica to the world of cricket, and how there are such icons of as Courtney Walsh and Chris Gayle are so popular in India. So yes, I would say in all the meetings, cricket did come up as a natural subject for discussion. Global Biofuels Alliance, since Jamaica is also a sugarcane growing country, so Prime Minister encouraged the Jamaican Prime Minister to join the Biofuels Alliance, and he in fact announced by himself that they were considering joining it in the very near future. Regarding the voice of the Global South, as I have already said, the Prime Minister appreciated India's leadership role and the fact that India, both in the G20 and also through the Voice of the Global South summits, is able to harness the voices of smaller developing countries and to express it in the global platform so that their interests are taken care of. I hope I've covered all the ones up till now. तो ये आप देख रहे थे जमैका के पीएम की भारत यात्रा पर विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता, जहां इस बात को सामने रखा गया कि किस तरह से भारत और जमैका के जो संबंध हैं वो न केवल कहना चाहिए कि कूटनीति स्तर पर बल्कि खेलों के स्तर से भी एक नए आयाम को जो है वो हमेशा से सामने रखते रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जमैका और पीएम मोदी के बीच के जो बातचीत हुई जमैका के प्रधानमंत्री और पीएम मोदी के बीच, उसमें क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। दोनों देश जो हैं वो मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर अपराधों में अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। जमैका के पीएम ने कोविड के दौरान हजारों कोविड टीके उपलब्ध कराने में भी की गई भारत की मदद की जो है वो सराहना की है। रक्षा, शिक्षा, व्यापार, संस्कृति, कृषि, व्यापार दोनों देशों के बीच संबंधों के स्तंभ रहे हैं। दोनों देशों के बीच संबंध 4C पर आधारित हैं, यानी संस्कृति, क्रिकेट, राष्ट्रमंडल और कैरिबियन। दोनों देशों के बीच संबंध 4C पर आधारित हैं। तो ये एक मोटी बात जो है वो निकल करके सामने आई और इस बात को भी सामने रखा गया कि किस तरह से ये संबंध जो हैं वो लगातार प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। बहरहाल यहाँ पे वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खेल समाचार। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो वापस एक बार फिर से लौटते हैं खेल की खबरों की और बात कर लेते हैं विराट कोहली की कि आखिरकार उनके लिए कानपुर टेस्ट जो है वो क्यों अहम रहा। देखिए रिपोर्ट। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली लगातार पुराने रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं और अब वो अंतर्राष्ट्रीय
इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।